हेलो माय लवली ट्रेडर्स, व्हाट अ वंडरफुल डे इट वाज। मार्केट के अंदर ओपनिंग होते ही साथ डाउनफॉल और विद इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स कंप्लीट रिट्रेसमेंट एंड देन अ कंसोलिडेशन। सो आई वुड से टुडे वाज अ डे ऑफ ऑप्शन राइटर्स। और कल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का, आरबीआई मॉनेटरी कमेटी का डिसीजन है इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के ऊपर। We are hoping, the markets are hoping that it will maintain the status quo and it won't change, the interest rates won't change, but it is the calm before the storm that is happening, my friend. We can say that today the consolidation that we saw in the markets was basically a preparation for a major move. It can be an up move, it can be a down move, but as I can sense, it has to be an up move as the markets have been correcting and consolidating for a lot of days now. Now this video is going to be an amazing and crucial video for you. आज हम इस वीडियो के अंदर सारी वो चीजें डिस्कस करेंगे जो मार्केट्स के अंदर हुई और कल क्या होने के चांसेस हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। जस्ट इन केस आपने अगर अभी तक रोरिंग बुल्स को टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया है, so the link is in the description below. Join us on Telegram because वहां पे लाइव मार्केट्स के अंदर हम रेगुलर अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं that can turn out very crucial for you to take better trade decisions in the live market. And one more thing, if you are still not a part of Roaring Bulls Red Circle community, there is a very good opportunity for you. The link is in the description below. Be a part of the Red Circle community because as I keep saying that the more we learn, the more we earn. Our objective at Red Circle is to make sure that we become a community of highly educated, highly charged people who are trading with discipline into the markets. क्योंकि डिसिप्लिन के साथ जो ट्रेडर ट्रेड लेते हैं उनके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं मार्केट के अंदर। नाउ वील क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो। लेट मी गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ। हर एनालिसिस वीडियो को हम तीन मेजर सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट द लोकल एंड द ग्लोबल न्यूज एंड द इवेंट्स दैट affected the markets for the day and that can affect the markets tomorrow as well. And other than that, the second section is about the complete analysis of how today's trading session went, and the third section is about what are the expectations, what are the levels for tomorrow's trading session. कल है 7 तारीख और वेंसडे का दिन है। कल मॉनेटरी कमेटी का डिसीजन भी है इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के ऊपर, वो भी एक बहुत क्रूशियल दिन रहेगा। हाई वोलेटिलिटी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट के अंदर, तो हमको थोड़ा सा सेफली कल के दिन ट्रेड लेना होगा। बहुत सोच समझ के छोटे लॉट साइज को मेंटेन करते हुए हमको ट्रेड सेटअप करना होगा। जब तक पॉलिसी अनाउंसमेंट चल रहा है तब तक हम अपने ट्रेड्स को कंट्रोल रखेंगे। सो दिस इज उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोलिंग बुल्स द स्टॉक मार्केट शो। So now let's quickly jump into the video. Let me quickly turn on the screen recording for you. Okay, yes. So let's quickly talk about important post-market bites, and in this section we'll discuss everything that is important for the markets today, that was important for the markets today and that can affect the markets tomorrow. Okay, yes, the screen marking tool is on. Yeah, so Nifty opened the day with a small gap up at 14,738 and fell nearly 160 points in for first 5 minutes. Now, if we'll just go on to the charts for 1 second and if we look at the Nifty 50s chart, this is the Nifty 50 chart. Now, if you look closely here, it is such an amazing thing to see. This is today's trading session and if you can see, Nifty fell a lot within the first 5 minutes. This is the first 5-minute candle and can you see that it recovered completely, taking support at 14,577. ये सपोर्ट हमने पहले से मार्क करके रखा है, आपको एक क्लियरली दिख रहा होगा। नाउ आई कैन श्योरली से दैट यू मस्ट फील द इंपॉर्टेंस ऑफ द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस जोन दैट वी मार्क इन आवर चार्ट्स। सो बहुत ब्यूटीफुली निफ्टी ने सपोर्ट लिया और कंप्लीटली रिवर्स कर गया। नाउ दिस कुड हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी टू बाय ओवर हियर, बट द प्रॉब्लम इज फर्स्ट हाफ एन आवर के अंदर मार्केट के अंदर डेटा इतना क्लियर नहीं होता है, पोजीशंस बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा को एनालाइज करने का सही टाइम नहीं होता है। तो फर्स्ट हाफ आवर वी यूजुअली डोंट ट्रेड, वी वेट। बट फर्स्ट हाफ आवर के बाद मार्केट के अंदर हुआ क्या? एक्सट्रीम कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन में मोस्टली ऑप्शन राइटर्स पैसा बनाते हैं टाइम डिके का फायदा उठा के। ऑप्शन बायर के लिए कंसोलिडेशन इज अ टफ थिंग। ओके, so we'll go back to our notes section. Okay, 1 second. Yes, yeah. So
Nifty opened the day with a small gap up that we have discussed, and it then fell completely and recovered completely. After that, it had a pullback and consolidated all day long. So Nifty closed the day at 14,683. That was up just 45 points, 0.31% for the day. Asian markets की हम बात करें, so Asian markets are have closed mixed, and Japan market falling the most. European market are in green as of now. Bank Nifty की अगर हम बात करें 32,920 पे ओपन हुआ था बैंक निफ्टी, वहां से 580 पॉइंट पहले 5 मिनट के अंदर गिर गया। और सबसे अमेजिंग बात देखने की ये थी कि वोलेटिलिटी इतनी जबरदस्त थी। मैंने मॉर्निंग में लाइव टेलीग्राम पे ही आपको ये बात बोल दी थी, वोलेटिलिटी बहुत हाई है, सोच समझ के ट्रेड लें। क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हमने अपना ट्रेड सेटअप किया था जब हमारा डे हाई था उस समय का, वो ब्रेक हुआ था, फर्स्ट हाफ आवर का हाई जो है वो ब्रेक हुआ था, हमने उस समय अपना ट्रेड सेटअप किया था। बट देन द इंडेक्स fell down from there. It took a resistance at the CPR zone and it fell down. It was a false breakout, जिस कारण से हमारा एक स्टॉप लॉस बेट हुआ, but not at all a problem. We took next trade with complete discipline and patience, और हमारा next trade के अंदर प्रॉफिट बेट हुआ, वो सब मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। सो बैंक निफ्टी कंप्लीट वोलेटिलिटी कारण इतना गिरा, यानी 580 पॉइंट गिरा, 580 points down, and immediately in the next 10 minutes 670 points up. So it was great to see what kind of move was there in the bank nifty index. Just let me show you the bank nifty graph once. Okay, yeah, so it is here, look at it. It's so wonderful to see what kind of volatility was there in the market. Such a huge red candle from the levels of 32,912 to 31,912. It fell down to 32,357 within the first candle, 5 minutes. And look at the next two candles, my friend. Next three candles, complete recovery and even shot up. तो ये जो रिकवरी है, this recovery showed the strength of the bulls, and here we did set up our trade in the bank nifty index. इस मूवमेंट पे हमने CPR के ऊपर अपना ट्रेड सेटअप किया था for our next resistance. Our target was very small. Our target was just 33,100. That was our next resistance for the immediate resistance for the day, but then it took a resistance at the CPR and retraced. It hit our stop loss and went back, and then it came back up. So it was kind of consolidation after that, but initially यहाँ पे bulls की strength दिख रही थी, so we took the trade. But again, as I say, stock market is a game of probabilities. What you can do is you can manage your probability. आपको अपनी probability जीतने की manage करनी है, और साथ में आपको ये देखना है कि अगर आपकी probability आप manage कर रहे हैं, और अगर आप by chance आपका जो कैलकुलेशन है, आपका जो एनालिसिस है वो गलत हो जाए, तो हाउ कैन यू कंट्रोल योर लॉस? अ लॉट ऑफ पीपल इन द स्टॉक मार्केट डोंट बिलीव इन कंट्रोलिंग देयर लॉसेस. दे ट्राई टू फाइट द मार्केट. मार्केट गिर रहा है तो भी अज्यूम करेंगे कि नहीं, अब तो ये ऊपर जाएगा. नहीं जाएगा मेरे दोस्त, और जब जाएगा ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी. सो यू हैव टू स्टार्ट गिविंग स्मॉल स्टॉप लॉसेस एंड यू हैव टू स्टार्ट ट्रेलिंग योर प्रॉफिट्स. दैट्स हाउ यू विन इन स्टॉक मार्केट. ओके, सो दैट वाज आवर first trade in the bank nifty index, जहां पे हमारा stop loss hit हुआ. Let me quickly come back to the notes section. We'll discuss further and then we'll move ahead. So again, it was a trap for option buyers. आज का पूरा दिन ही option buyers के लिए एक तरीके से trap था, क्योंकि breakout भी नहीं हुआ और हमारे last day के low से breakdown भी नहीं हुआ. It was a big range consolidation for the indexes. Okay, so कल I am expecting a big move tomorrow after the RBI policy announcement on interest rate. Today's consolidation looks like a sign of big move that can happen tomorrow. ये मैं आपके साथ अभी just discuss किया starting में. Markets expect monetary policy committee to keep the interest rate unchanged as the COVID cases rise in market and there is still some weakness in the economic recovery. GST collection अच्छा आया है, but हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेटा was weak and auto sales data was also not very amazing. In general, COVID cases भी बढ़ रहे हैं, तो in general there is not very much strength in the economic recovery in terms of its signals. So there are chances that the monetary committee might there are high chances that the monetary committee might not change the interest rates and it will maintain the status quo. So this can be a positive news for the markets. Okay, this can be a positive news for the markets. One thing, and then Delhi and Maharashtra night curfew is something that added to the negative sentiment for the market. कल के दिन में ये महाराष्ट्र वाला जो
नाइट कर्फ्यू वाली बात है, कल के ट्रेडिंग सेशन में जो इतना नेगेटिव मूव देखने को मिला, आई थिंक दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑलरेडी अकाउंटेड इनटू द मार्केट्स कि महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन या कर्फ्यू की बातें चल रही हैं, दिल्ली की चीज भी आज कह सकते हैं कि अकाउंट कर ली है मार्केट ने. नाउ वी हैव टू वॉच व्हाट हैपेंस टुमारो. द प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो सेट टू मीट विद द चीफ मिनिस्टर्स. चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग है 7 अप्रैल के ऊपर, 7 अप्रैल को. एंड द प्राइमरी टॉपिक about this meeting can be that the younger population that is above 18 years old can be vaccinated. So this can be a very big positive news for the markets, because the younger population is the population that is carrying the virus to the most places, because they are the most active individuals, going the most out and most working individuals. So if the government takes an action towards vaccinating people who are below 45 years old and above 18 years old, that can seriously turn into a good positive news for the markets as well as for the economy and for the whole country as well, because जो कैरियर्स बन रहे हैं वायरस के, अगर उनके साथ ही ट्रीटमेंट चालू हो तो ये चीज एक पॉजिटिव साइन हो सकती है इकोनॉमी के लिए. अदर देन दैट, अदानी पोर्ट्स said that it handled cargo volume of 73 million metric tons in quarter 4 of financial year 21, and it was up by 27% compared to last year. So stocks of Adani Ports hit an all-time high today. That was something to watch, closing up by 12.3%. So that was one thing to watch. Other than that, Nifty Pharma was doing good. Glenmark, Cadila Healthcare, Laurus Labs and Granules were all up by 3 to 7% for the day, and these companies were mostly the companies that were supplying drugs to the US markets. Okay, so Nifty Pharma was also doing really well for the day. Now a lot of bear gang are thinking that markets will fall to 10,000. बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि मार्केट्स गिर के 8,000 पहुंच जाएगा, 7,000 पहुंच जाएगा. लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, बुल मार्केट में बैठे हैं हम. वी आर इनटू अ बुल मार्केट एंड कोरोना इज ऑलरेडी अकाउंटेड इनटू द मार्केट्स. ऑलरेडी द फॉल हैज बीन अकाउंटेड इनटू द मार्केट्स. डोंट एक्सपेक्ट that kind of fall from the markets. Yes, the markets might correct for a while, and if you look closely, they have already corrected a lot in past 1.5 month. फर्स्ट ऑफ मार्च से लेके अगर आप देखना चालू करेंगे, सो 5th of April तक, if you will see that there has been a lot of correction and a lot of consolidation in the markets. So it would be much better if you won't wait for the markets to go to 7,000, 8,000, 10,000. There is high possibility that the markets won't go there, and this is the right time if you are thinking to pile up some stocks, some quality stocks, some blue chip stocks. This is the time to pile them up, because markets यहां से ऊपर जाने के chances ज्यादा हैं बजाय नीचे जाने के. They might go a little bit further down, but I'm telling you that 14,000 is a strong support for the market, and 13,500, 13,800 is a very strong support range for the market. So don't expect markets to fall down to 6,000-7,000 levels again. That would not be possible, I feel so. Okay, so now we'll quickly discuss a basic thing before moving ahead to the charts. What were the trades that we took? मैंने बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर 32,900 का जो कॉल ऑप्शन लिया, ट्रेड लिया, इसके अंदर रेड सर्कल मेंबर्स के साथ भी ट्रेड शेयर करी थी, विद डिफाइंड स्टॉप लॉस, डिफाइंड टारगेट एंड डिफाइंड एवरेज वैल्यू. उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ. मैं आपको रीजन अभी थोड़ी देर पहले ऑलरेडी चार्ट पे शेयर कर चुका हूं. रीजन बहुत सिंपल था कि इंडेक्स अप मूव देकर, बुलिश स्ट्रेंथ दिखाकर, वॉल्यूम के साथ अप मूव देकर सीपीआर जोन से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, एंड इट डिड हिट आवर स्टॉप लॉस. दैट इज वेरी मच फाइन. We know that stop loss is the cost of trading business. हर बिजनेस की एक कीमत होती है, स्टॉप लॉस हमारे ट्रेडिंग बिजनेस की कीमत है. सो वी आर ओके टू गिव दैट कॉस्ट. इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, यू हैव टू गिव द मनी फर्स्ट. इन्वेस्टमेंट करोगे तभी पैसा वापस आएगा ना. आपको कोई भी बिजनेस जब आप खोलते हैं, तो मैं हर बार आपको ये बोलता हूं, नो बिजनेस रन्स विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और विदाउट एनी रिकरिंग कॉस्ट. सो स्टॉप लॉसेज आर पार्ट ऑफ योर रिकरिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस. अब आपको कहां से फायदा बनाना है, पैसा बनाना है, स्टॉप लॉस आपके कम होने चाहिए, प्रॉफिट्स आपके ज्यादा होने चाहिए. दैट्स हाउ यू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट. इसीलिए स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना सीख लीजिए, बिकॉज ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी 365 में से 250 दिन मिलेगी आपको. पर अगर आप पैसा खो देंगे, अपना कैपिटल लूज कर देंगे, तो आप ट्रेडिंग की दुनिया से ही बाहर हो जाएंगे. सो यू हैव टू मैनेज योर स्टॉप लॉस एंड ट्रेल योर प्रॉफिट्स. दैट्स हाउ यू विन. सो वी टुक द सेकंड ट्रेड.
पहली बार हमें 65 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। सेकंड टाइम हमने जब ट्रेड सेटअप किया, बैंक निफ्टी 32,800 पुट ऑप्शन का हमने पुट ऑप्शन बाय किया, वी बॉट इट 505 रुपीज, सम पीपल बॉट इट एट 500 रुपीज एंड वी ट्रेल्ड द स्टॉप लॉस टू 650। वी बुक्ड 150 गुड पॉइंट्स ओवर हियर, 145 150 गुड पॉइंट्स ओवर हियर एंड वी एंडेड द डे इन पॉजिटिव। इट वाज नॉट अ वेरी ह्यूज डे ऑफ पॉजिटिव। आई पर्सनली मेड लेस देन 20,000 रुपीज फॉर द डे। आई वाज नॉट ट्रेडिंग इन ह्यूज क्वांटिटीज एंड आई सेड इट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ कि आज का दिन ज्यादा बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड करने के लिए नहीं है। Most of the people, even if they have traded just with one lot, they would have also ended in green. A lot of Red Circle community members made money, a very small money. 375 rupees of profit is not a very big profit, but hey, my friend, remember here, plus is plus. ग्रीन इज ग्रीन, ग्रीन इज गुड। सो प्रॉफिट्स आर प्रॉफिट्स, छोटा या बड़ा उससे मतलब नहीं है, प्रॉफिट से मतलब है। आज का दिन एटलीस्ट आपका लॉस का नहीं रहा, ये आपके लिए कीमती चीज है। सो दैट इज हाउ अ ट्रेडिंग प्रोफाइल लुक्ड फॉर द डे। नाउ व्हाट वील डू इज वील क्विकली लुक इनटू द charts. First, what we'll do is we'll look at the one second, let me open up stock edge. Okay, so we'll look at the the advance to decline ratio. There were 31 advances and 19 declines in the Nifty 50 index. So it was not a very good advance to decline ratio, I would say. And if we'll talk about the sectors, how the sectors performed, let me just open this up. Okay, so if we'll talk about the gainers, Nifty Pharma, as I can see, Nifty Pharma, Nifty Small Cap, Nifty Metal, Nifty Reality, these were all the gaining sectors. Now, this is one thing to notice here, that Nifty Small Cap is working, Nifty Reality is working, and Nifty FMCG is working, Nifty Mid Cap is also doing good. ये देखने वाली बात है कि ये सारी चीजें ऊपर हैं। Now the thing is कि ये सारी चीजें ऊपर होने का ये भी मतलब है कि ऐसा नहीं है बुल्स ने अपनी स्ट्रेंथ लूज कर दी है। Bulls are still there in the market and maybe they are just waiting for the RBI policy announcement. They are waiting for the monetary policy announcement and they might turn very bullish on the markets. That is possible. If we talk about the losers, well, the losers were mainly the banking sector, if you will see. So the private banks and the Nifty bank, the financial index, were the major contributor to the losing of index. So this might also reverse, my friend, after tomorrow's RBI policy announcement. You can see, you might see a change in this behavior of Nifty bank index as well as the Nifty financial services index. So this is possible. Okay, let me quickly check, do we have the FII DII data over here? Let me just check once. Okay, so 5th of April, no, we don't have the FII DII data as of now on this website, so that's not a problem. We'll quickly, what we'll do is we'll look at the option chain of Nifty 50 index. This is the option chain of Nifty 50 index. If you look closely, option chain data हमको क्या बोल रहा है? Option chain data बोल रहा है कि 14,500 is a very good support over here, ठीक है? यही बोल रहा है। And 14,800 is a good resistance over here, ठीक है? ये हमको ऑप्शन चेन डेटा बोल रहा है। So what I can sense from the option chain data is that our trading range for tomorrow can be 14,500 to 14,850. Why I'm saying 850 is because हो सकता है with good announcements, with good positivity in the market tomorrow, we might see market shooting up to 14,800 levels, and if they sustain above 14,900 levels for any reason, अगर 14,900 के ऊपर sustain कर जाते हैं, then we might see markets making an up move and shooting up for the 15,000 levels. So that would be important thing. We'll go to the charts and see कल के क्या levels हैं। देखिए आज कैसा बिहेवियर किया इंडेक्स ने वो तो हमने देख ही लिया है। कल के लेवल्स को हम जो है चार्ट पे समझ लेते हैं, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो लेवल रहेगा वो आपका, 1 second, let me remove this. यस, एक इंपॉर्टेंट लेवल आपका ये रहेगा, यहां पे एक लाइट कलर की आपको लाल लाइन दिख रही होगी। दिस वाज द हाई फॉर द डे, सो आई वुड से दैट 14,763 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस 1 फॉर टुमारो एंड रेजिस्टेंस 2 आपके लिए यहां मार्क्ड है ऑलरेडी 14,847। ये आपके दोनों रेजिस्टेंस हैं। लेवल्स को मार्क कर लीजिए, अभी वीडियो को पॉज करके इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए। और लाइव मार्केट के अंदर मैं आपके साथ चार्ट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूं, इसीलिए टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखिएगा रोरिंग बुल्स को। जो जनरल ग्रुप है वो फ्री टू वॉच है सभी के लिए, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि ये लाइव मार्केट के लिए आपको आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लाइव मार्केट में फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। सपोर्ट की अगर हम बात करें, सो वी माइट सी एन इनिशियल सपोर्ट राइट ओवर हियर 14,649 लेवल कैन बी योर इनिशियल सपोर्ट। और मेजर सपोर्ट की अगर हम बात करें, सो दिस इज योर मेजर सपोर्ट, दैट इज
No, sorry, not 13,654. Yes, it went to 13,654. So we can write 13,650. One second. Okay, this level would be your support. Yes. So 14,649. Yes. Okay. This can be your first support. Support one. Let me just move the charts up for the second support. Yes. Okay. So yes. Sorry for the initial thing. I said the wrong support. Yeah. फर्स्ट सपोर्ट यहां पे है, ठीक है, 14,649 के आसपास आपका फर्स्ट सपोर्ट है, सपोर्ट वन। सपोर्ट टू आपका यस्टरडेज लो इज आई विल कंसीडर दैट इज अ सपोर्ट टू, आज का भी लो यही था, दैट वाज 14,577। ये मैं आपका सपोर्ट टू मानूंगा। अगर मान लो फॉर सम रीजन दिस सपोर्ट ब्रेक्स, सो यू कैन सी द इंडेक्स गोइंग टू द थर्ड सपोर्ट दैट इज 14,500। ठीक है, ये तीनों सपोर्ट हमने निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए कल के लिए मार्क कर लिए हैं। हो सके तो आप भी इन लेवल्स को अपने चार्ट्स में मार्क कर लीजिए। Now what we'll do is we'll look at the बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी इंडेक्स की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है? ओके, बैंक निफ्टी इंडेक्स की ऑप्शन चेन बोल रही है कि 32,500 पे एक इंडिसाइसिव जोन है, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ कॉल एंड पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बोथ साइड, बट सपोर्ट कहां मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा 32,000 पे। इट्स अ गुड सपोर्ट ओवर हियर, ठीक है, दिस इज अ गुड सपोर्ट। एंड रेजिस्टेंस कहां मिलेगा? 33,000 पे मिलेगा रेजिस्टेंस यहां पे हमको, ठीक है। सो दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस दैट वी कैन सी। नाउ इफ somehow there is positivity in the banking index because of the monetary policy that is going to come up tomorrow, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को बहुत ब्यूटीफुली 33,000 का लेवल ब्रेकआउट करते हुए। 2 दिन से एफर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी 33,000 का लेवल ब्रेकआउट करने की, बट हो नहीं पा रहा है। सो दिस कैन ब्रेकआउट एंड वी कैन सी द इंडेक्स गोइंग टू 33,500। सो कल के लिए अगर ऑप्शन चेन डेटा को देखते हुए बात करें, सो आई कैन एक्सपेक्ट द इंडेक्स टू मूव बिटवीन 32,000 टू 33,500। इट इज अ वाइड ट्रेडिंग रेंज, बट टुमारो माय फ्रेंड, एज आई हैव बीन टेलिंग यू, इट्स गोइंग टू बी अ वॉलेटाइल डे बिकॉज टुमारो इज एन इवेंट, एंड जब भी कोई इवेंट होता है the markets tend to give big moves in at least one direction after the volatility ends, so we have to consider that as well. Now we look at the charts for the bank nifty index. Okay, bank nifty index में हम क्या हुआ मार्केट के अंदर ये हमने देख लिया था। हमने यहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा, ये हमने बात कर ली थी क्योंकि हमें लग रहा था बुलिश स्ट्रेंथ है, बट इट रिट्रेस्ड फ्रॉम हियर। ओके, हमने कहां पे ट्रेड सेटअप किया था? सीपीआर का मिड लेवल जब ब्रेक हुआ तो वहां ट्रेड सेटअप किया था। बाय द वे ये सीपीआर कहलाता है। इनकेस आपने सीपीआर मास्टर क्लास नहीं अटेंड करी हो तो फ्री है, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीपीआर की मास्टर क्लास अटेंड कर लीजिए। सेंट्रल पाइवट रेंज, आई एम अ बिग फैन ऑफ सेंट्रल पाइवट रेंज, ब्यूटीफुल इंडिकेटर, हेल्प्स अ लॉट। ओके, सो सेंट्रल पाइवट रेंज, यहां पे हमें एक ब्रेकआउट फेलियर मिला जिस कारण से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ इस लेवल पे, एंड दैट इज वेरी मच फाइन। इट देन कंसोलिडेटेड फॉर अ व्हाइल, बट हमारा जो ये सपोर्ट था दैट वाज 32,598। मैंने लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, अगर इनकेस सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम इंडेक्स को, बैंक निफ्टी इंडेक्स को वापस कल के लो तक गिरता हुआ देख सकते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। वी ऑलमोस्ट टच्ड द यस्टरडेज लो अगेन, जो कि सुबह था, वहीं हम दोबारा टच किए एंड वी कैप्चर्ड दिस मोमेंटम। यहां हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया 32,598 के लेवल से, 32,598 के लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 32,400 तक का जो पूरा मोमेंटम था, ये हमको पूरा कैप्चर करने को मिला। वी स्टार्टेड आवर ट्रेड सेटअप ऑलमोस्ट एट दिस लेवल even before the resistance was broken, because it was approaching the resistance for the second time. पहली बार यहां पे ब्रेक करने पहुंचा था, and then it was approaching the resistance for the second time, so we captured this momentum over here and we booked our profits over here with good profits over here. So आपके पास अगर लॉजिक है आपकी ट्रेड के पीछे, अगर आपके पास आपका स्टॉप लॉस क्लियर है, आपके पास आपका टारगेट क्लियर है, तो आप बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड सेटअप कर सकते हैं और आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके अच्छा साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अगर एक चीज ये फैक्ट है माय फ्रेंड, लिसन मी हियर, it is a fact that 90% of the retail traders lose money in the stock market. Now that is primarily because of one major factor, that they lack discipline. अगर आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। You need to be in discipline, you need to keep your ego aside, you need to focus on protecting your wealth when you are trading in the stock market. Okay, so that's a very crucial advice from my side to you. And we'll quickly look at tomorrow's levels for bank nifty index. सपोर्ट की अगर हम बात करें, so we will get पहले हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। we'll get the initial resistance at this level 32,809 is your resistance 1, and today's high is your resistance 2, that is 30,042 is your resistance 2. R1 और R2 मैंने आपको बता दिए हैं, मार्क कर लीजिए। रेजिस्टेंस बहुत कीमती लेवल होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट होता है, लाइव मार्केट में आपको अपडेट करूंगा, अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत बढ़िया आप मूव देखने को मिलेगा 33,500 के लेवल्स तक। नाउ सपोर्ट की अगर हम बात कर लें, सो सपोर्ट विल कम अराउंड एट
let me open up. Okay, yes, so support will come around approximately at today's low, that was this. So I'll say support 1 is available at 32,439 levels. Okay, 32,439 is your first support. Second support I would say is right here, support 2. Support 2 is available at, let me clear it off. Okay, so support 2 is available at this level, okay. So 32,290 is your support 2. Okay, this is support 2, this is your support 1. So दोनों सपोर्ट के बीच ये पूरी आपकी एक बेसिकली सपोर्ट की रेंज है. इन केस ये ब्रेक डाउन होती है फॉर एनी रीजन, सो वी माइट सी इंडेक्स फॉलिंग डाउन टू दिस लेवल, दैट इज 31,987. ओके, सो दीज आर योर सपोर्ट्स. हमने सपोर्ट की भी पूरी बात कर ली है और रेजिस्टेंस की भी पूरी बात कर ली है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए. वील क्विकली व्हाट वील डू इज वील लुक एट द global markets. What are the global markets doing as of now? So if you look closely, SGX Nifty is trading just 23 points up for the day as of now at 7:51 p.m. and volatility index India VIX, we have already talked, it's below 21 as of now for the day. US markets की बात करें, so Nasdaq is up by just 13 points, Dow Jones is up by just 10 points. So नॉट अ वेरी हाई अप मूव, बट द पॉइंट इज कि कल ही बहुत ज्यादा मोमेंटम आ चुका है. नास्डैक और डाउ जोन्स दोनों के अंदर ऑल टाइम हाई पे डाउ जोन्स पहुंच चुका था ड्यू टू extreme positivity with good US jobs data and a stimulus package being talked about. So this is the global scenario that is looking good as of now, but the point is that Indian markets are not reflecting the global scenario. So the Indian markets are not very well reflecting how the global markets are behaving. That might be because of two major factors. One is the COVID cases are rising, so the investors are in a bit of worry over here कि क्या होने के chances हैं. So a lot of people are taking out money or not pumping in the money into the market right now. And second thing is the wait for the monetary policy that is going to be announced by RBI tomorrow. And hopefully, as I've been seeing in this whole video, that the status quo would be maintained and कोई चेंज नहीं आएगा इंटरेस्ट रेट्स में. एंड ये भी एक पॉजिटिव न्यूज होगी मार्केट के लिए. द मार्केट कैन अकाउंट दैट न्यूज एज अ पॉजिटिव न्यूज एंड इट कैन शूट अप, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच इन द लाइव मार्केट्स. अगर कल 33,000 का बैंक निफ्टी का लेवल ब्रेक आउट होता है, then we can say that yes, the bulls might be back in action to take the bank nifty index again back up high. HDFC has been underperforming for a very long time now. नेट बैंकिंग की नेगेटिव न्यूज जब से HDFC की आई है, तब से HDFC बैंक बुरा ही परफॉर्म कर रहा है. बट द डे व्हेन HDFC twins start to move will be the day when the bank nifty index might start to move as well. So we have to wait and watch till tomorrow how the markets can behave. And I would request you all to stay safe from the coronavirus. कुछ समय की और बात है, वैक्सीनेशन ड्राइव इज ऑन. इन केस आपने अगर अभी तक रोडिंग बुल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, so this is the subscribe button below. Go and hit the subscribe button, because this is a game-changing channel for all of us out here who are willing to trade and learn into the stock market as an intraday trader, who are willing to make money as an option buyer. Sometimes we do sell options, but I am an avid option buyer and I make money while buying options. So everyone has their own preferences. You might be an option seller, so you can share your suggestions and your thoughts down below. आज का दिन जिस तरीके का दिन था, so it was a good day to sell options, but Anyways, so I hope we all are doing very well right now, and I hope आपने टेलीग्राम पे मुझे अभी तक ज्वाइन कर लिया होगा. जस्ट इन केस इफ यू वांट टू बिकम अ रेड सर्कल मेंबर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. सपोर्ट टीम की भी आप उनसे भी बात कर सकते हैं. दे विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग, एंड एक्चुअली दे लव टू हेल्प यू आउट विद any kind of support that you need. The red circle membership is just for 999 rupees a month. That is very cheap. If you look at it, you have to pay just 33 rupees a day, and that will bring you a lot of learning, my friend, and learning eventually brings earning. As I keep saying that the more we learn, the more we earn. So I hope you like the video. पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक से मिलता है मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन इज द ओनली मेजर ड्राइविंग फोर्स in this universe behind every good thing. So I hope that you loved the video. Don't forget to hit the like button. This is Utkarsh Bhargav. You're watching Roaring Bulls, the stock market show.